Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Very nice. Why is it nice? Because for the last 20 minutes I've been continuously speaking without unmuting myself. Anyways, no worries. I'm not going to spend any more time and to waste any more time speaking. Right. सबसे पहले तो is my voice and sound clear to everybody? खामोश पिक्चर के साथ बगैर साउंड के साथ स्क्रीन anyways say pair overview of endocrine system. Sorry, first I will have to ask you guys. जी ये स्क्रीन शेयर चल रहा है, आवाज सही आ रही है? Nice. Overview of endocrine system. ये हमारे पास कवर हो चुका हुआ टॉपिक. पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ज्वाइन हो चुका हुआ है. ज्वाइन कह रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका हुआ है. उसके बाद हमने थायराइड हार्मोन्स भी कर लिया जो लास्ट लेक्चर किया. ठीक है. उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स कर लिया हुआ है. ठीक है. एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कर लिए हैं. मेल एंड फीमेल गोनेडल हार्मोन्स कर लिए हैं. अभी जो पोर्शन रह गया हमारा वो ये वाला पोर्शन, हार्मोन ऑफ पैनक्रियास, इंसुलिन ग्लूकागोन और ये कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स. ठीक है. ये पैराथायराइड हार्मोन्स. और कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स के अंदर हमारे पास हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम देखें कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी होती कहाँ पे और कितनी होती है. Out of that 1%, 0.9% of the calcium is present in intracellular spaces of the body. Only 0.1% is present in ECF. And that 1% is fluctuable, and that 1% can be measured by various lab results. ठीक है.
24 milligram per deciliter. This 0.1% of the extracellular fluid. So if we try and calculate this 1% of the whole of the calcium present, that would be somewhere around 94 milligram per deciliter. %41 of the calcium is bound with plasma proteins, that is non-diffusible. Very big chunk of the calcium in the blood, in the body, is bound with blood. Okay? Oh yeah, non-diffusible. This cannot be changed, exchanged from any one organ to another organ in the body. The 9% of the calcium is bound with anionic substances, negatively charged anionic substances, citrate, phosphate. This 9% of the calcium that is bound with anionic substances is diffusible. Okay? It is diffusible or non-ionized. ये ऐसी फॉर्म में है जो diffuse हो सकता है, ठीक है, from one organ to another organ. The remaining 50% of the calcium is both diffusible and ionized. Diffusible beyond है वो diffusible pure ionized. Drainments of calcium. कैल्शियम कम हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरकैल्सीमिया हो जाए तो it depresses neuromuscular excitability. ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया हो जाए तो ये जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होती है ये कम हो जाएगी. ठीक है, ये hypocalcemia. Fall in free calcium results in overexcitability of nerves and muscles. Fall in free calcium results in overexcitability of nerves and muscles. Hypocalcemia, decrease in free calcium increases neuronal sodium permeability. Decrease in free calcium increases neuronal sodium permeability. The ability of the sodium to diffuse across the neurons. इस सारा मैकेनिज्म आप लोगों ने नवा मसल में पढ़ा हुआ है, so you may apply your knowledge there as well. छोटी सी बात,
फ्री कैल्शियम में कमी है, न्यूरोनल सोडियम परमिबिलिटी अल्टर हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड है रेस्टिंग पोटेंशियल का वो काफी ऊपर की तरफ चला जाता है। Calcium absorption. Vitamin D is essential for the absorption of calcium from the GIT. Calcium is absorbed from duodenum by a carrier to calcium is absorbed from duodenum by carrier mediated active transport. Calcium is absorbed in the body, especially small intestine, by facilitated diffusion. This ability of the body is cannot this sorry, this feature of the body, that small intestine absorbs the calcium by facilitated diffusion, must be understood by keeping one fact in mind, that even this absorption, this diffusion of calcium, this absorption of calcium from the small intestine by facilitated diffusion, even by when it's a facilitated diffusion, it is poorly absorbed. Okay? It is only absorbed properly in the presence absorbed from a renal tubule into blood. What is that? 90% of the filtered calcium is reabsorbed from the proximal tubule. अच्छा जी, यानी कि जगह वंड लिया ना, loop of Henle and early distal tubule. Remaining is reabsorbed selectively from the late distal tubule and early collecting duct. Of calcium required to maintain a constant total amount of calcium in the body. Adjustments required to maintain a constant total amount of calcium in the body. So regulation क्या control करती है? ये जो चेंजिंग्स हो रही होती है कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी में, उनकी स्लो रिस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स को मॉनिटर करती है, ताकि बॉडी कांस्टेंट टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम को अचीव कर सके. Calcium is maintained by adjusting the extent of intestinal calcium absorption
and urinary calcium excretion. बस हमारे पास जिसमें हमने देखा था कि ये बैलेंस मेंटेन कैसे हो रहा है, उसके बाद ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम इज मेंटेन बाय एडजस्टिंग द एक्सटेंट ऑफ इंटेस्टिनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन. ठीक है. फॉस्फेट कैल्शियम का क्वेश्चन तो पूछ लें, फिर मैं फॉस्फेट शुरू करता हूँ. चलो मैं थोड़ा सा कवर हो गया जो मेरे पीछे जब अनम्यूट नहीं हुआ तो उसको टाइम मेरा वेस्ट हुआ. मेरा क्या, हम सबका ही वेस्ट हुआ, सॉरी फॉर दैट. वो जो टाइम वेस्ट हुआ उस चक्कर में ना मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे ताकि मैं थोड़ा सा कवर करवा दूं. कोर्स चलो, कोर्स टॉपिक शुरू हो गया, उसका छोटा सा पोर्शन भी कवर हो गया. तो आई हैव अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन, आई हैव अ बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस. कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर्स में से प्लीज पूछें. अभी का क्वेश्चन है तो भी पूछें. 2 मिनट है आपके पास, 2-3 मिनट हैं. क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, नहीं है तो जल्दी से नो 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 करो, ताकि 2-3 मिनट में मैं आगे शुरू करूं. फॉस्फेट करवाना है, अभी विटामिन डी करवाना है, काफी कुछ करवाने वाला है इसमें. कमन बेटा, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस? अनदर मिनट. क्वेश्चंस? आ जाए. As I said, I was gonna give only a couple of minutes to the questions. You guys didn't bother to ask anything. No worries. I can go right back to my topic. The average phosphate के ऊपर आए थे भी, कैल्शियम देख लिया हमने. The average total quantity of phosphorus represented by both the ionic form is 4 milligram per deciliter. ठीक है. Phosphate जो ions होते हैं हमारी बॉडी में, that is phosphorus. जो total quantity of phosphorus that is represented by ionic and other ionic forms in the 4 milligram per deciliter.
That is 3 to 4 milligram in adults and 4 to 5 milligram per deciliter in children. It has a very good intestinal absorption, and excretion in feces is in combination with unabsorbed calcium. Excretion of the phosphate can be quite relieving for the human body. Otherwise, human body tends to keep on acting erratically in the absence of hormones. Sorry, in the absence of phosphate. Remaining absorbed in blood and excreted in urine. The excretion of the phosphorus in feces in combination with unabsorbed calcium, and the remaining of the phosphorus is absorbed in the blood and is excreted in urine. Excretion of phosphate को जरा देखें. Renal phosphate excretion is controlled by an overflow mechanism. Renal phosphate excretion is controlled by an overall overflow mechanism. When phosphate concentration in the plasma is below the critical value of 1 millimole per liter, the phosphate in the glomerular filtrate is reabsorbed. ठीक है? सिंपल सी बात है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये मिनरल्स वगैरह जो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अगर ये फॉस्फेट हमारे पास 1 मिलीमोल पर लीटर से कम जाता है तो उसको फौरी हॉस्पिटल लेके जाएं, उसको फ्लूइड्स वगैरह लगवाएं, उसको किसी तरह इंजेक्ट करवाएं फॉस्फेट. ठीक है, मगर बॉडी क्या करती है, बॉडी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वहां से फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है. दैट्स सिग्नल द स्टिमुलस. Above this concentration, the rate of the phosphate loss is directly proportional to the additional increase. जितना ज्यादा phosphate आएगा बॉडी में absorb हो उतना ज्यादा excrete हो रहा हो. ठीक है, ये नॉर्मल सी अपने थ्रेशोल्ड को जोड़ दो, जितना ज्यादा आ रहा उतना ज्यादा जा रहा, जितना कम आ रहा उतना कम जा. ठीक है, नेक्स्ट इज hormone regulation of calcium and phosphate hemostasis. होम्योस्टेसिस का मतलब पता है आपको? किधर हो चैट वाले हो? ये मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें एक वर्ड है होम्योस्टेसिस. इसका मतलब क्या है? यू मे आंसर इन द चैट प्लीज. इक्विलिब्रियम को कहते हैं. And that's the gist of it. No, I was expecting something more extravagant, like inshallah. That is the gist of it. Hormone regulation of calcium and phosphate homeostasis. इसमें हमने देखना है विटामिन डी को, कैल्सिटोनिन को और पीटीएच को. ठीक है, तीन चीजें हम देखेंगे जो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस. कैल्शियम और फॉस्फेट होम्योस्टेसिस को मद्देनजर रखते हुए हम ये तीन हेडिंग्स में रेगुलेशन को चेक करेंगे, जिसमें विटामिन डी है, कैल्सिटोनिन है और पीटीएच. That PTH is parathyroid
हार्मोन और पैराथॉर्मोन। जी विटामिन डी देख लें पहले। Several compounds derived from sterols belong to vitamin D family. They all perform more or less the same function. सबका तकरीबन एक ही काम। Vitamin D3 cholecalciferol is the most important of these. Sterol belonging vitamin D family. Okay. Vitamin D receptors are present in the nuclei of their target cells. जो भी बॉडी में टारगेट सेल्स होंगे उनके न्यूक्लियाई पे जो रिसेप्टर्स हैं विटामिन डी के लिए वो और उनके जो रिसेप्टर्स हैं विटामिन डी के लिए वो न्यूक्लियस में पैदा होते हैं। ठीक है ना। स्टीरॉयड हार्मोन है ना विटामिन डी जो है वो स्टीरोल बेस्ड है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बनता है स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन। तो क्लासिफिकेशन में इसको हमने देखा था कि ऐसी जो हार्मोन जो स्टीरॉयड हार्मोन जो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूजुअली न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर के ऊपर होते हैं या साइटोप्लाज्मिक होते हैं। लास्ट ऑप्शन ये थी कि फिर आपके साइटोप्लाज्म के बावजूद साइटोप्लाज्म और इस तरह जो है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स वहां पे नहीं है। तीसरी जो रिसेप्टर्स की टाइप थी वो थी मेम्ब्रेनस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे प्रोटीन हार्मोन्स और कुछ अमाइनो हार्मोन्स भी काम करते हैं। ठीक है। और जी starts with 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। उसके आप पे आपकी यूवी लाइट स्किन के ऊपर एक्ट करती है। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब यूवी लाइट आके एक्ट करती है तो बनता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की एक और सोर्स भी है, डाइट से आता है। This cholesterol goes into the liver, and the liver it is processed, and a product 25-hydroxycholecalciferol is generated. Now this product is taken to kidneys. In kidneys, this 25-hydroxycholecalciferol had two fates. One of them is 24-25 dihydroxycholecalciferol, which is an inactive compound. It is not biologically active. And the second phase, the second outcome is 1-alpha hydroxylase enzyme is used, and 1,25 dihydroxycholecalciferol is synthesized. That is not inactive. That is an active compound. Now, this 1-alpha hydroxylase is directly upregulated by decreased quantity of calcium, increased concentration of path hormone, and decreased phosphate. ठीक है। ये कैस्केड है हमारे पास किस चीज का भला 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल जो एक्टिव कंपाउंड है उसको अचीव करने का। डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है। इट इज टेकन टू किडनी, किडनी में ये मजीद डिवाइड होता है, मजीद प्रोसेस होता है। दो फेट्स हैं, पहली फेट है 24-25
डाइहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरॉल बनवा लूं, यानी कि बॉडी बना दे, दैट इज एन इनएक्टिव कंपाउंड, इट विल बी excreted out, processed somehow or the other. The second pathway, the second way would be by the presence of a 1-alpha hydroxylase enzyme. This cholesterol 25 hydroxy cholecalciferol is converted into 1,25 dihydroxycholecalciferol, which is an active compound. Skin, cholecalciferol, vitamin D3. लिवर में ये कन्वर्ट हो जाएगी 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में, किडनी में ये जाके कन्वर्ट हो जाएगी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में, इंटेस्टिनल एपिथेलियम में जाके ये by the help of calcium binding protein, calcium stimulated ATPase and alkaline phosphatase. ये इसके ना 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल के फेट्स हैं. When it goes to the intestinal epithelium, यहाँ तो ये बाइंडिंग प्रोटीन के साथ लग जाती है, ठीक है, यहाँ तो ATPase के साथ, यहाँ अल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ. Lastly, intestinal absorption to calcium. Calcium की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऐसी हो कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो सके रेडी. ठीक हो गया जी. ये इसकी डाइजेशन थी, ये इसकी सिंथेसिस थी. मैं आपको लिख के दिखा दूं तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए. ये सिंथेसिस ऑफ this was supposed to be the anabolism side of the vitamin D3, and this will be the catabolism side. यहाँ पे आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं कि कोलकैल्सिफेरॉल कैसे लिवर में जाके 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, किडनी में जाके 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, ठीक है. और उसके बाद फिर ब्रेकडाउन शुरू हुई थी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम में जाके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन यूज कर लेंगे, ठीक है. उनके साथ बाउंड होकर लग रहे हैं तभी ये बॉडी से नहीं जाएंगे. कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपेज, you know that area better than I do, much better than I do. I'll discuss about it later. इंटेस्टिनल एपिथेलियम में एक पोर्शन उसका कैल्शियम बाउंड प्रोटीन के साथ अटैच होगा, वो तो कहीं नहीं जा. दूसरा है कैल्शियम स्टिमुलेटेड एडिपेज. calcium binding protein, calcium stimulated ATPase and alkaline phosphatase. I need to drive to get all of this phenomena excreted out of the body. So वो क्या कहते हैं, symbiosis के लिहाज से intestinal absorption of calcium is manipulated, ठीक है, as per requirement. अगर ज्यादा की जरूरत है एब्जॉर्प्शन की तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है. अगर एक्सक्रीशन की ज्यादा जरूरत है तो एक्सक्रीशन ज्यादा तेज हो जाएगी. ये एज पर नीड के लिहाज से काम चल रहा होता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन. ऑलराइट.
जी कैल्सिटोनिन इससे पहले ये calcium ion concentration controls the formation of 125 dihydroxycholecalciferol। आप देखा होगा कि हमने पहले कैल्शियम शुरू किया था, ठीक है, उसके बाद हम फॉस्फेट पे गए थे, उसके बाद हम विटामिन पे आ गए थे, विटामिन डी पे। ठीक है, ये आपको ना रिलेशनशिप बता रहा है कैल्शियम और विटामिन डी का। कैल्शियम concentration controls the formation of 125 dihydroxycholecalciferol. The formation of this 125 dihydroxycholecalciferol in the kidney is controlled by the parathyroid hormone. आज जो इसकी concentration है वो calcium and concentration controls the formation of 125 next week. Internal environment maintain करना, जी कालू साहब सही। The maintenance of salt and water in body, not just salt and water, full environment. Don't pigeonhole this phenomenon. पॉसिबल है जितना आज तक डिस्कवर है उससे भी कहीं ज्यादा हो, जितनी all these are good answers. Good one, Mujib. Sorry, I said good one, Mujib. All right. If you have any questions, you may ask. आज का तो सिंपल ही था, जिसमें से आधा तो आपको आवाज ही नहीं आई, ठीक है। चलो, कोई बात, हो जाता, बड़े बड़े शहरों में ऐसी हरकतें होती हैं, कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारी में दाने जाने। I'm not claiming to be a shahswar, but Allah have it. No worries. Inshallah, I'll cover it up. तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, you have 1 minute left. Question. No question. Challenge. This is Dr. Harun Habib signing off. It's 11 o'clock. Allah.